Maharaj is saying to everyone to meditate for a bit, so everyone becomes on the same level. Then we can start. Yeah, for some time I will tell them. I'll play this. They understand. Здравствуйте, друзья! Махарадж всех приветствует и для начала просит всех подготовиться к медитации и помедитировать, возможно, несколько минут или чуть-чуть подольше. Поэтому настраиваемся на медитацию. Yeah, how it's more comfortable. Just keep your back straight. Садимся в удобное положение, главное спину держать прямо. Как вам удобно, так и садитесь, располагайтесь.
2 घंटे लगा। सत्संग जो कहा गया है, जहाँ पर शक्ति का तो विचार किया जाता है। शक्ति क्या है? शक्ति एक ही है, ईश्वर भी एक ही है और मनुष्य भी एक ही है। सब उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। उस ईश्वर एक ही होते हुए भी उसको जानने वालों ने अनेकों रास्ते बनाए हैं, अनेक शास्त्र बनाए हैं, अनेक धर्मशास्त्र बनाए हैं। इतने रास्ते इतने धीरे धीरे चलते चलते अब मनुष्य भटक गया है। कभी किसी रास्ते पर चलता है, कभी किसी रास्ते पर चलता है, उसको वास्तविक रास्ता नहीं मिलता, इससे वो उसकी शांति उसको नहीं प्राप्त होती। इनको बताओ। So Maharaji is saying Satsang means to be together with truth, and eternal is truth. So Satsang means to be together with eternal. You want to translate this first, or yeah? So I say it to me. Yeah. Махарадж говорит, что сатсанг означает единение с правдой. Правда и с истиной. Так, слышно? Лучше? Вы говорите громче. Вообще не слышно? Вы говорите громче. Махарадж сказал о том, что сатсанг означает в первую очередь единение с истиной и с правдой. Вечная истина. Вечная, внутренняя вечная истина. С внутренней вечной истиной. Спасибо, Юрий. Okay. Yeah. So, and to find eternal as a truth. During the evolution of Earth, we have made many ways to reach to the eternal. Many ways means many different kind of religions which have been made to reach to the truth. И чтобы достигнуть единения с истиной и через нее прийти к единению с вечностью, существует много путей, среди которых различные религии. И мы используем религии именно для достижения этой истины и дороги к вечности. But now what's happening is that people, they don't have enough trust in their path, in their religion, so they are trying different ways, and which is making them confused, and which is bringing them not shanti, not peace in their hearts. К сожалению, сейчас что происходит, что люди пробуют различные пути к тому, чтобы прийти к истине, и немного в замешательстве по поводу выбора именно той дороги, которая их приведет к этой истине. И у них исчезает спокойствие, шанти. ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले अपने विचार बनाने पड़ते हैं। मैंने ईश्वर के मंदिर तक पहुँचना है। भौतिक सुख और ईश्वरीय आध्यात्मिक सुख अलग अलग। जब तक भौतिक सुख कम नहीं किए जाएंगे तक आध्यात्मिक सुख की ओर समय लगेगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं। दोनों चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सुख के लिए त्याग जरूरी है, भौतिक सुखों का त्याग, सात्विक सुख।
आहार सात्विक हो, विचार सात्विक हो, रहन सात्विक हो, उसके अंदर में दया, प्रेम और सेवा का गुण उत्पन्न होने चाहिए, तो वो एक मार्ग पर चले। अनेक धर्मशास्त्र पढ़ करके अनेक रास्तों पर ज्ञान प्राप्त करने से उसको शांति नहीं मिलती है। एक रास्ता हो, उसके साथ एक नाम हो। वर्तमान समय में नाम की महिमा गाई गई है। अनेक युगों में कई युगों में कितने थे, तो जो वर्तमान युग चल रहा है इसमें नाम की महिमा दी है। सभी महान पुरुष नाम को आगे करके आगे बढ़े। On the microphone? People understand English? Друзья, кто знает английский, я потому что немного волнуюсь, я попрошу переводчика на английском тоже озвучивать, поэтому, возможно, для себя вы что-то будете больше понимать, поэтому сначала на английском будет, потом я буду на русском стараться вам близко переводить. Okay. So Maharaji is saying to connect to the eternal. First of all, you have to change your thought process. Your thoughts should be wise to connect to eternal. Then he said that there are two kinds of happiness in this world. One is material happiness, and another is spiritual happiness. So you connect with the eternal, then you have more of spiritual happiness in you. And to get the spiritual happiness, you have to sacrifice your material happiness. You cannot be material and spiritual at the same time. So you have to have a positive approach towards spiritual happiness and spiritual practices. You can make it by being more pure in your heart. And to be pure in your heart, you have to have three qualities in you, which is compassion, being compassionate about each and every living being in this world. Secondly, loving, you have to love each and every person in this world, help. And thirdly, you have to serve each and every living being in this world. And when you do this unconditionally, your heart starts to become pure slowly. And when your heart will become pure, the eternal will come into your heart. And with these characteristics of being compassionate, being loving, and being serving each and everyone, you have to have a name in your heart, which you should chant constantly. Yeah, a name, any name of eternal which you like. It doesn't matter if you are, if you like, for example, Rama, or if you like Krishna, whatever name you like, you can keep it in your heart and you chant it constantly, so eternal gets connected with you. And this is the only practice for this age, for this yuga, Kali Yuga. For Kali Yuga, the only practice is to chant the name. Yeah, all the other practices, all the other Vedic rituals were performed in earlier ages. Yeah, and it's for that time only. Yeah. Wherever you feel like you have to, if you don't understand, you can ask me. Thought process. First of all, you have to bring in your thoughts that you want to connect with eternal. Yeah. Для того, чтобы прийти к истине и о том, что говорит Махарадж, что важно в наше время, во-первых, необходимо контролировать свои мысли.
Махарадж отметил, что существует два вида счастья, духовное и физическое. И для того, чтобы прийти к духовному счастью, yes, there are, first of all, there is spiritual happiness and material happiness. Those two cannot be together. To be the spiritual happiness, you have to have three characteristics. One is being compassionate, second is being helpful and loving, and third is serving every living being, including not only humans, every living being like plants. И для того, чтобы прийти именно к духовному счастью, к этому единению, необходимо иметь сочувствующее сердце, необходимо помогать другим и любить весь окружающий мир. No, then there is, you have to take, this will make your heart pure when you do these practices. Yeah? И практикуя все перечисленные вещи, вы очищаете свое сердце. Then after that, you have to think about eternal by constantly taking the name of eternal, any name which you like, any name which connects to you. Yeah? И для того, чтобы именно очистить свое сердце, необходимо иметь какую-то веру и цель внутреннюю, какая будет вам ближе. So this, taking the name, chanting, is the main practice for this age, Kali Yuga. Главная практика в Кали-югу является чантинг, повторение святых имен. So all the other practices like rituals which you see or which you read on the books, they were supposed to be done for earlier ages, because to do them perfectly for this age is not possible. So only possible perfect practice to do is to take the name, to do japa, chanting. То есть все остальные практики не настолько эффективны и не настолько действенны. То есть самое главное — это повторение святых имен и чантинг. Japa. वैसे आध्यात्मिक को समझे, आध्यात्मिक का मार्ग क्या है? आध्यात्मिक करने से नहीं होता। आध्यात्मिक का मतलब बाहर से अंदर की ओर अपने को अपना अनुभव करो, अपने अंदर को जाओ, अपने अंदर के विचारों को बताओ। बाहर देखने से, बाहर सुनने से, बाहर पढ़ने से, सुनने से बाहर की तरफ की वृत्तियाँ, बाहर की वृत्तियों को रोक करके अंदर की वृत्तियाँ बनाओ। अध्यात्म उसको है जो अंदर की ओर खोज करे। हमारे अंदर सब कुछ है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। तुम उसको पहचानने की कोशिश करो, उसको पहचानने के लिए नियम से प्रार्थना करो। प्रार्थना के बाद उसका नाम, जो नाम आपको पसंद है, कोई भी नाम है, सब नाम उसी के हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर। इसी एक नाम का आधार लेकर के उसका स्मरण करते रहो, तो आपके अंदर की ऊर्जा जागेगी, तो अनुभव होएगा, तो आपको यकीन होएगा क्या बाहर की वृत्तियों से अंदर की वृत्तियों में शांत है। शांति सब चाहते हैं, तो शांति को ओर जाना पड़ेगा, वो अपने अंदर खोजना पड़ेगा, बाहर नहीं। उसी को अध्यात्म में कहा गया, जो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करता है। Slowly. Maharaj is saying to be spiritual, first of all, you have to understand what actually is spiritualism. Spirituality is looking inside you. It's not outside. Spirituality is inside you. So you have to start looking inside first of all. Для того, чтобы прийти к духовному развитию и вообще понять, что такое духовность, прежде всего нужно смотреть внутрь себя, то есть не обращать взгляд именно вовнутрь себя.
why you have to see inside? Because whatever it's outside, it's illusion. Whatever you see through your eyes, whatever you feel, it's an illusion. It's all material. Yeah? And for a spiritual person, you have to see, you have to be with the truth. And truth is without any material thing. So the truth is inside you already. You just have to start looking for it. So the journey of a spiritual person starts with looking inside, not outside. Yeah? Почему необходимо взглянуть именно внутрь себя? Все, что мы видим вокруг нас, все, что воспринимаем материей, это все иллюзия. Для того, чтобы прийти к истине, необходимо именно взглянуть внутрь себя и почувствовать эту истину. Then he said that all the wisdom, all the knowledge, all the love, it's already inside you. You have to find it out by yourself. And that's what all the great spiritual practitioners did in their life. They found themselves inside of them, not outside in the world. And to find yourself inside, you have to have a daily routine of prayers by asking the Eternal to give you strength so that you can do your practice wisely. And secondly, you have to take the name, any name, no name is big or small. All the names of any gods or goddesses are same. So take any name which you like and chant it regularly. It will make your heart pure to become more aware of spirituality. Все знания, вся любовь, которая нам нужна, она находится внутри нас. И для того, чтобы прийти к истине, прийти к осознанию этого, необходимо выбрать то Бога или именно мантру, то есть повторять каждый день именно святого для вас человека, и именно этот путь, он будет правильным в единении с самим собой и в выборе этого пути к тому, чтобы открыть для себя истину. Then he's saying all the religions which we know right now are of this age, all are new religion, and all of them they teach the same thing, mainly to take the name. In each and every religion you find that they have the practice of chanting, practice of doing a japa. Someone does it on mala, someone does it on rosary, someone does it on some other kind of beads, but they are doing japa in each and every religion. So we should understand that chanting or japa is the main practice for this age to become more aware spiritually. Все современные религии, они основываются именно на практике чантинга, повторения святых имен или на джапе. समझने के लोग भी समझ रहे हैं जो चीज़ें चाहते हैं जो इनके अंदर ही है, हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। बाहर ढूंढने से, बाहर मिलने से बहुत समय लगेगा, उसमें मिलना मुश्किल होता है। बाहरी विचार जो है, अंदर विचार, अपने आप को अपन खोजो। जो बोलने वाला है, देखने वाला है, जहाँ सुनने वाला है, सब ये शक्ति कहाँ से आ रही है, उसी को अध्यात्म में अपने अंदर की शक्ति को खोजो। प्रार्थना से आप उसको जगा सकते हो। जब आप स्वयं जाग जाओगे तो आपकी शंका निवृत्त हो जाएगी, आपको शांति प्राप्त होगी, जो चाहिए वो आपको अंदर ही मिल जाएगा।
नियम से प्रार्थना करो। प्रार्थना का टाइम होना चाहिए, कभी सुबह कभी शाम कभी दिन में नहीं। आधा घंटा नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। उस परमपिता परमात्मा की जो शक्ति है वो हमारे अंदर बैठी हुई है, इसकी वजह से सारा संसार चल रहा है। उस प्रकृति को भूल गए, प्रकृति को भूल करके जो किया है उसी से अशांति है। प्रकृति को जानने की कोशिश नहीं करी, अपनी प्रकृति को पहचानो। So Maharaj is saying what the chanting does to you is it energizes yourself, your inner being, to be more aware of eternal. That's the only purpose of chanting during a japa. It's same like a bank balance. You have more in your account, you are rich. So same way, for a spiritual bank balance, you have to do japa to make yourself rich spiritually. Bank balance, accounts in your bank, you have more money, you are more rich. The same way, the more you chant, the more rich you become spiritually. So that gives you more energy. Для того, чтобы узнать и понять свое внутреннее «я», практика чантинга очень действенна и эффективна. И Махарадж провел сравнение с банковским счетом, то есть чем больше вы накапливаете средств, чем больше вы практикуете чантинг, тем больше вы познаете себя, и тем больше у вас ресурсов внутри вас. Не чантинг, а джапа. Japa. So and then he said that when you start to do japa, it has to be constant every day, as in you should do it in a routine every day, preferably in the morning. Do it at least for 15-20 minutes every day, and do it after praying to Eternal to give you more strength, more wisdom to find your path. Then he said that you feel not peaceful because you are forgetting that Eternal is inside you. And when you start to practice like this, slowly you'll start to find him. You'll start to see that the energy which is running this complete universe is already inside you. And when you will start to feel that energy, all your confusions and your unpeacefulness will fade away. Джапу необходимо практиковать с утра, посвятить этому 15-20 минут. Лучше, если это будет делаться после молитвы, и делать это постоянно. Тогда вы сможете почувствовать себя более уверенным, у вас пропадут сомнения, потому что вы обратите взор внутрь себя. And when you start to find yourself, you start to understand that the biggest mistake we humans are doing in this age that we have started to forget nature, as in Mother Nature, because we are not thinking about her, and that's why we have this no peace in this earth, because everyone is being so egoistic and selfish that they don't think about earth, they are always thinking about themselves. They are not taking care, they are not serving Mother Earth. So you have to start serving Mother Earth also by taking care of trees and plants. It will energize your soul very, very effectively.
Для того, чтобы прийти к миру и спокойствию внутри себя, также необходимо понять, что мы должны думать о природе, мы должны заботиться о природе, и нам следует обратить взор на природу вокруг нас, возможно, ухаживать за деревьями, растениями. Это даст нам большой заряд и силы для того, чтобы взглянуть внутрь себя и познать себя. Then he said that the Shakti, the energy which is running the whole universe, the energy of the eternal, the same energy is also inside you. It's just that you are not able to see it because you are not practicing properly to see it. And when you will start to practice right, you will start to feel that energy, that eternal energy inside you, and you understand that if each and every human will start to practice right, we can really make this earth peaceful very fast. Порой нам кажется, что энергия умиротворения, энергия истины, она вокруг нас, но на самом деле она также внутри нас. И практикуя все то, о чем говорилось, вы можете почувствовать это и увидеть это именно внутри себя. जब तक अपने आप अपने अनुभव से अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानोगे तब तक धर्मशास्त्र पढ़ने से धर्म पैदा होगा। सत्य है असत्य है सब अपने अपने अनुभव लिखते हैं, उसी अनुसार आपका अनुभव हो जाए जरूरी नहीं है। आप अपने अनुभव से अपनी वृत्ति से उसको पहचानो, अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानो। उसके लिए सिर्फ एक ही साधन है, नाम का सुमरन। नाम का सुमरन करते रहो, मन ही मन में जपते रहो। उसका जितना उसका संग्रह होगा उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब कोई चीज़ को ढूंढना पड़ता है तो उसके लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अंदर अपनी ऊर्जा को इतना प्रकाशित करो कि आपको अंदर में चीज़ दिख जाए। जिसको आप बाहर ढूंढना चाहते हो आपको आपके अंदर ही मिल जाए, तो आपकी शंका निवृत्त हो जाएगी। अपने स्वरूप को पहचाने, बाहर की पहचान नहीं होती है। So Maharaj is saying your light is inside you, and every person have their own pace, own speed to find themselves. Yeah, someone can find themselves faster, someone takes time. So you don't have to have. You should not feel sad that you cannot do it right now. Maybe you are capable of doing it better than others, maybe not. So, but don't stop practicing. Don't stop doing the japa. That's the only way to find yourself. People are. Махарадж говорит о том, что свет находится в каждом из нас, в каждом из нас он есть, и кто-то приходит к этому быстро, кто-то приходит к этому постепенно. Не стоит расстраиваться или сдаваться, если у вас не происходит это сразу. Необходимо продолжать практику, и у вас обязательно все получится. You say people read the literature about experiences of different people. They are writing what they have experienced, yeah, from their own practices. But it's not that you will have the same experience, because your thought process is different. So you will experience it maybe differently. So try to do your own practice and experience it by your own. And the only way to experience is to pure
your heart first of all by being compassionate, loving and serving everyone and taking the name of the Eternal, doing japa or chanting constantly. So that will make you look from outside to inside. The light is inside you. Yeah? Which whatever you see outside is not the light. It's an illusion. The real light is inside you. So you have to awaken that light. He said that to see something in the dark, you need light. So the same way, to see something which you want to see outside, it is inside you. And to see that light, you have to do these practices. Многие люди ошибочно начинают узнавать, читать опыт других практикующих, в чем есть ошибка, поскольку у каждого из нас свой путь, и не стоит ориентироваться на опыт других людей. И повторяя практику джапы, выполняя все остальные рекомендации, вы сами придете к этому свету и достигнете, увидите его. Он находится именно внутри вас, не снаружи. Просто необходимо его увидеть и разглядеть внутри себя. दिमाग से अपने विचार करो कि जिसने इतनी सृष्टि रची है, जल तर थर तर पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सब उसी ने को भी रचा है, मनुष्य को भी रचा है। तो सब जंगल में जंगल के जीवों की रक्षा कर रहा है, जल में जल के जीवों की रक्षा कर रहा है, सबको आहार दे रहा है, सबकी सुरक्षा कर रहा है। क्या वो आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा नहीं कर सकता है? अब अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, अपने सुख के लिए चिंतित है, जबकि सब सुख उसने दे रखा है। उसे विचार करके उसको भूल जाते हो तो तुम दुखी हो, जो उसको भूल जाता है वही दुखी है। प्रेम निरंतर नेम ले, नित्य निरंतर प्रेम नेम लेने से उसे संबंध बना लोगे जब तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप जिस शांति को चाहते हो, शांति आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी। उसकी शरण क्यों नहीं लेते हो? उसका एक नाम माँ है, ओम का निराकार रूप साकार में माँ है, उससे सब ये प्रकट हुआ है, उसी में ये सब समा जाता है। उसको चिंतन करो, उसी में से सब प्रकट होता है, उसी में सब लय होता है। कोई सूर्य चंद्र जितने भी जगत सोच है, जितने शास्त्र हैं, प्राण है, जो भी मार्ग है, जितने धर्म हैं, सब उसी में लय होते हैं, उसी से प्रकट होते हैं। इस युग के लिए सबसे सरल रास्ता है, उसका चिंतन करो। So Maharaj is saying as Eternal has made this earth, there were plants, trees, animals, humans, they evolved slowly. And Eternal is taking care of everyone. Eternal takes care of plants and trees by giving them water and sun. He takes care of animals by giving them enough food. And he takes care of humans also by giving you different kinds of fruits, vegetables, food, water, air. So Eternal is taking care of everyone. Now, we just have to improvise our thought process and think about Eternal. It's because we are being so selfish in thinking about ourselves. We don't think about Eternal. That's why we are so unhappy, so unpeaceful. The moment we will start to think about Eternal, we will become happy. Махарадж отмечает, что поиск истины, он прежде всего в служении, в заботе об окружающем мире, о людях, о животных.
необходимо заботиться о растениях, возможно, поливая их, необходимо заботиться о людях, о животных, кормя их. И истина она в этом, и люди порой ведут себя эгоистично, забывают о служении, о том, что необходимо заботиться о других, об окружающем нас мире. So then Maharaji said that he related Om with Mother Goddess Ma. He said that Om is related with Ma, the name of Mother Goddess. Om is formless and Ma is with form. He said that everything in this universe is formed through Om. And it will merge back to Om. So basically, it's being formed through Ma, and it will merge into Ma, each and everything. So to become more spiritually aware, you have to start thinking about Ma, or Mother Goddess, which is the main source of each and every one, each and every living thing in this universe, and each and every living things will go back to the same Ma. Mother Goddess. Yeah. Mother Goddess is called as Ma. Any Mother Goddess. Для того, чтобы прийти к духовному и для того, чтобы развиваться духовно, необходимо не забывать о матери, о том, что она дала нам в жизни, думать о ее процветании и настраиваться на это. Yes, very fast. So to tell me where you lost. And everything will go back to Ma. Om is the formless thing, and Ma is with form. So, Om is formless. Om doesn't have any form, and Ma is with form. Om. No, not Om. 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 You know Om? Yes, I know. Yeah. So the universe is being made for Om, and it will go back to Om. But Om is formless, and Ma is form. Om and Ma are same. Understand that? И Махарадж сравнил образ матери с знаком Ом, то есть образ матери — это материальное выражение именно этого знака Ом, а Ом сам по себе не имеет формы. अच्छा माना ये समझ से बहुत बाहर है। कीर्तन भी कहाँ पाएंगे इनसे? लगता नहीं कीर्तन कर पाएंगे। हाँ, कोई भी इसकी नाम उतारो। So Maharaj ji is saying we should should do some chanting of Mother Goddess, Kirtan, if you know this word. Yeah, so I will start it and you sing after me. Yeah. Сейчас мы будем повторять святое имя, киртан, кто знаком с этой практикой. Необходимо будет повторять за гуру. समस्कार और प्रसाद दोनों चीज बंद है। I think people can hear me without.
because I Вам же будет слышно без микрофона, правда? you just have to repeat me. Необходимо будет просто повторять. Давайте попробуем. It's Shrima. Shrima, Jayama, Jai Jayama. Yes. Shrima, Jayama, Jai Jayama. Shrima, Jayama, Jai Jayama. Swami
बोल जगदम्बा मैया की जय। अच्छा, लाल से हिंदी से रशियन, हिंदी से रशियन जैसा अनुवाद हो जाता तो समझ आएगी। ये समझा पा रहे हैं।
अंग्रेजी शब्द बोले उसके नहीं बन पा रहा उसका। अच्छा, रशियन, हिंदी से रशियन भाषा होगी तो हिंदी जानने वाले हो, रशियन जानने वाले हो। अपने अपने रोजगार किसी को पास कर देंगे। हमने अपने जीवन काल में अनेक शास्त्र अनेक धर्मों का अध्ययन करने के बाद शांति पाया, इसी माँ शब्द में कहा और इसी में सबको देखा, सभी धर्म इसी में रहे। इसका से अनुभव नियम से स्मरण करे, जब करे उससे ऊर्जा जब तक शरीर का प्रकट नहीं होगी, योगासन योग करने से ऊर्जा जब प्रकट होती है शरीर की, तब वो योग मार्ग चलने लायक होता है। ऐसे नाम शब्द से भी ऊर्जा प्रकट होती है, तब वो उसको समझने लायक उसके अंदर ताकत आती है। ऊर्जा बनने की खाली ऊर्जा बनानी पड़ती है। कितनी भी गड़ी कीमती गाड़ी हो, अगर इसमें तेल न हो तो चल तो नहीं सकती। चलिए इसकी शक्ति ऊर्जा है। ऐसी मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा है वो अपनी तक है, उसको दैवी ऊर्जा उसके अंदर तब होगी जब वो दैवी नाम का संग्रह करेगा। जब शक्ति या नाम का संग्रह होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो अपने को पहचानेगा। इसको डायरेक्ट रशियन में बोलने वाला होगा, उनकी समझ में उनकी आ सकती है। हिंदी से वो शब्द ही बन रहे होंगे। शब्द तो बन रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। मैं क्या करूँ? मैं नहीं बोलता हूँ फिर अपना रहता, कोई ढूंढ लो रशियन वाला। उसका कमजोर हो जाती है। तीन जगह बोल जाता है, हिंदी से अंग्रेजी से रशियन, तो ताकत कम हो जाती है शब्द की। जो कुछ भाव के बारे में पूछना होगा। समझ में आया किसी ने, जैसे नहीं आया तो पूछा। So Maharaj is saying I have also read and studied most of the religions of this world, and I found the ultimate peace in this one letter, which is called as Ma, which means Mother Goddess, and she connects with each and every human beings in very, very easiest way possible. So he's saying, I'm not pressing you to chant the Mother Goddess name, it's your wish, but I feel that I got more connected with this word, Ma. And he's saying without taking the Eternal's name with love, it's not possible to attain the happiness. Махарадж отмечает, что он исследовал большинство религий, и имя воспевания имени Богоматери, Матери, для него оно больше всего близко его сердцу, и он говорит о том, что он ни в коем случае не хочет этим как-то давить или влиять, но для него это самое близкое божество, и для него это стало его путем к истине и воспеванием имени
матери, вы можете тоже приблизиться к этому. If anyone has any confusion or any questions, they can ask. There should be no personal questions. People can ask spiritual questions or questions about sadhana or practices only. Сейчас время вопросов. Вопросы следует, чтобы они касались вашей духовной практики. То есть не задавая каких-то личных вопросов. Вопросы о практике, о том, о чем сегодня была беседа. Какую мантру матери мы могли бы повторять, не имея специального посвящения? Which mantra is better to practice if we don't have any spiritual attitude, any Initiation. Initiation, without any spiritual initiation, which is possible. महाराज जी वो पूछ रहे हैं कि अगर उनने दीक्षा नहीं ली है तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करना ठीक रहता है बिना दीक्षा लिए हुए? जिसने दीक्षा नहीं ली हो, जिसके पास मंत्र नहीं है, माँ का नाम उच्चारण करें। Yeah, they can take the name of Mother Goddess, Ma. साक्षात मंत्र है ये जप करें। You see, if no one has initiation, they can simply take the name of Ma, or they can even chant the same mantra which we were chanting. Повтори сначала вопрос, повторяй, потому что оттуда вопрос не слышно. Микрофон, хорошо? Повтори вопрос. Вопрос был, вы слышали о том, какую мантру возможно использовать, возможно повторять, какую мантру матери. Ответ состоит в том, что можно повторять имя матери, и в частности ту мантру, которую мы сегодня повторяем. Первый приезд Махарадж дал мантру именно для России, для русских людей, кто не имеет инициации. Мы это уже говорим. Может, микрофон повтори просто. Вы повторите. Свой первый приезд Махарадж дал эту мантру Шрима Джайма Джай Джайма, а именно для русских людей, потому что она звучит очень просто, очень в мантре очень важно правильно слова повторять, да? А она очень простая, легкая. Он дал именно для России, для русских людей эту мантру матери. इसके लिए कोई माला की जरूरत नहीं है। इसको चलते फिरते उठते बैठते हर समय कहीं पर भी इसको आप मन में जप सकते हो, उच्चारण भी कर सकते हो, जोर जोर से भी जप सकते हो। Maharaj is saying that for this mantra, which is given by Maharaj to most of the Russian people, it's like Maha mantra for Russian people, Shriva Jema Jai Jema. So he's saying you don't really need a japa mala or mala to chant this mantra. You can do it anytime, while walking, talking, doing any work, cooking, anything you are doing, you can chant this mantra anytime, inside your heart, or you can chant it loud also. Ну и уточнилось, что выбор этой мантры обусловлен тем, что она очень проста в повторении, можно без джапа ее повторять про себя или вслух. Без джапа, без четок можно. Делать джапу без четок. Ну и с четками тоже можно, так и слышно. Практический совет нужен. Когда мы повторяем
забывает о своей проблеме. Как сконцентрироваться на повторении молитвы, чтобы мысли не уходили? Чтобы не было, звук идет молитва, а ум думает еще другие мысли. Получается, что не молитва, наложение друг на друга. То есть вопрос в том, как сконцентрироваться на повторении молитвы и мантры. How is better to concentrate on pronouncing mantra so that your mind is keeping this mantra and you don't pay attention to some other things? How to concentrate your mind on mantra? Because sometimes the sound and mantra is they can separate. So how do you better to concentrate your mind and your sound, what you are pronouncing? महाराज जी वो कह रहे हैं मंत्र में अपना ध्यान लगाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये जैसे ये रशियन है ना, हमारा तो अलग, अगर हम उच्चारण करते हैं तो हम अलग उच्चारण करेंगे, जो उच्चारण नहीं कर पाते हैं, गणेश नहीं बोल पाते हैं, कृष्ण नहीं बोल पाते हैं, सब बोल पाते हैं। तो वो कह रही कि अगर उच्चारण गलत है, उच्चारण मुँह से नहीं हो रहा, अंदर से तो हो ही जाता है। हाँ, अंदर ही अंदर मजपा जब करें। So Maharaj is saying you don't really have to speak out the mantra if you think that the sound is not proper, the pronunciation is not proper, so you do the chanting inside, don't speak it out. Махарадж дал совет, что если звучание мантры у вас каким-то образом не идет, не происходит, то просто повторять мантру внутри себя, тогда не будет каких-то различий между тем, что вы говорите, и мантрой, и вашим умом. В сегодняшней лекции ничего не было сказано о любви, о себе. Было про заботу, было во всем, кроме любви. Было. Прослушайте потом. Так а вопрос-то в чем? Почему из-за того не надо делать? Вопрос в чем? Вот в этом вопрос. Почему ничего не сказано? Что вы думаете? Как сказать? Today we didn't speak much about love, so maybe you can add something about love itself, love to yourself, love to other people, to universe, I don't know. What is the question? Actually, I don't know what is the question, maybe... What is love? Что такое любовь, да? В чем вопрос? Да? Yes, what is love? We just want... So there is no question, actually. Maybe perhaps you can add something about love? If it's possible, about love. Yeah, I'll ask him what is love. Okay. Yeah, maybe it is. Great. महाराज जी वो पूछ रहे हैं कि प्रेम क्या होता है, प्रेम के बारे में कुछ बताएं। प्रेम जिससे मिलते हो तो प्रेम से मिलते हो, यहाँ पर आए तो कैसे आए हो, प्रेम से आए हो, जबरदस्ती आए हो, कोई खींच के लाया है, यही प्रेम है। और प्रेम किससे किया जाए? प्रेम ईश्वर से किया जाए,
हर इंसान से किया जाए, पेड़ पौधों से किया जाए, पशु पक्षियों से किया जाए, अपने शरीर से किया जाए, कहीं भी प्रेम कर सकते हो। प्रेम सब पहचानते हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने भी सृष्टि है सब प्रेम पहचानते हैं, पशु भी पहचानता है। So I asked Maharaji what is love. He said that I am here sitting in front of you. It is love. You are here sitting in front of me. It is love. Because you were curious about me, so you came here because there was some love. That's why you came. If there would have been an anger or hate, you wouldn't come here. No? So that is love. Then I asked him, whom to love? Maharaji said, love eternal. And love every living being in this world, because in each and every living being there is eternal. So if you start to love each and every living being, trees, plants, animals, humans, you will ultimately love eternal. So start loving each and everyone. Любовь заключается в том, что Махарадж сейчас сидит перед вами, что вы сидите перед Махараджем, что вы сюда пришли, значит, ваше сердце, оно чисто от каких-то обид, от злобы. И также был задан вопрос, как любить, как проявлять любовь. Ну и ответ, возможно, очевиден. Необходимо любить все, что вас окружает, потому что любовь, она во всем. И, собственно говоря, в этом и ответ на вопрос, что такое любовь и как к ней прийти. Есть ли вот практические способы, чтобы добраться до заключения помимо медитации? Чего? Ну, помимо того, что можно медитировать, есть ли какие-то практические способы? Вопрос о предназначении, как его найти. The question is how to find your destiny, maybe meditation or some other steps. How to find your destiny? That's the main question. Which destiny? Какое предназначение? Духовное или? Both, so material and spiritual, but I think maybe more material. Both. महाराज जी वो पूछ रही है कि अपने लक्ष्य को कैसे पहचाना जाए। अपने लक्ष्य को कैसे पहचाना जाए पूछ रही है। लक्ष्य बनाओ, पहले लक्ष्य बनाओ, पहचानना जाए। लक्ष्य तुम्हारे बनाने का हाथ में है, ये बना के थोड़ी रखा है, लक्ष्य बनाना पड़ता है। जहाँ जाने के लिए रास्ता ढूंढ चढ़े, अपने लक्ष्य को पहले बनाओ, पहले पहचानने के लिए रास्ता है। सबका लक्ष्य ईश्वर होता है। अपना लक्ष्य अपने आप बनाओ, कहाँ जाना है आपने। ईश्वर के पास जाना है, किसी देवता के पास जाना है। तो वो पूछ रहे हैं भौतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य अलग होता है। हाँ, बिल्कुल अलग होता है। भौतिक लक्ष्य परिवर्तनशील है, आध्यात्मिक लक्ष्य परिवर्तन नहीं होता है। So, Maharaj is saying you make your own destiny. You have to aim for it first of all, and you make your own destiny. He's saying everyone's destiny is to go back to eternal. Yeah? Then he's saying material destiny is changeable. It will keep changing. So if you look your destiny in material world, it will change. It will not be same all the time, because that's the character of material things, that they keep changing. But spiritual destiny, it doesn't change. It stays
like in one, because it's truth. Yeah? And each and every person, if the person looks himself as a soul, so the soul's destiny is to go back to eternity. В материальном плане ваше предназначение, оно изменчиво, то есть оно всегда может меняться. А в духовном же плане предназначение вашей душе к тому, чтобы прийти к истине и познать эту истину. Как чувствовать свое божество? Что должно происходить внутри? Какие ощущения? What emotions should the person feel when he finds his God and his mantra, his God? Ishtadeva maybe. What the person feels when he finds his own Ishtadeva or God? महाराज जी पूछ रहे हैं कि एक इंसान के अंदर कैसे भाव जगते हैं जब उसको अपने इष्ट से मुलाकात होती है। जब कोई इंसान अपने इष्ट को पा लेता है तो कैसे भाव होते हैं उसमें? उसके भाव वही अनुभव कर सकता है, वो जान सकता है कैसे भाव हो रहे, सब प्रकट होंगे, उसके अंदर में सब गुण अपने आप आने लगेंगे, सात्विक विचार होंगे, सात्विक भाव आएंगे, सबसे प्रेम करने लग जाएगा, सब में अपने इष्ट का दर्शन करने लग जाएगा, श्याराम में सब जाने अपने इष्ट को विश्व में देखने की सामर्थ्य होनी चाहिए, इससे उसका वैर नहीं होगा, किसी झगड़ा नहीं करेगा, ये लक्षण उसके अंदर आते हैं। Maharaj is saying when you start to see each and every person as your Ishta, as a God, you will have this emotion of compassion, of love and of unconditional service to each and every one. It means you are getting close to your God, to your Ishta. Understand? But how to find? Yes, how to find. That's the answer. Yeah. Ответ в том, что Вопрос на русском. вопрос был в том у девушки, как понять, что вы нашли своего Бога, своего Иштадеву. Махарадж говорит о том, что как только вы приближаетесь к этому, вы почувствуете это, то есть вы будете чувствовать любовь, сострадание к другим людям, вы увидите Бога в каждом, с кем вы соприкасаетесь, с кем вы общаетесь. В этом ответ. महाराज जी पूछ रहे हैं अपने इष्ट को कैसे पहचानेंगे? अपने इष्ट को कैसे पहचानेंगे? हमारे इष्ट को बनाओ, तुम पहचानना कैसे? बनाओ, किसी को भी इष्ट बनाओ, इष्ट बनाया जाता है, जब पहचान होगी, जब बनाओगे किसी को इष्ट बनाओगे। हाँ, वही कैसे बनाया जाए इष्ट किसी को? कितने हैं, जितने नाम है, जितने इष्ट हैं, कितने महान पुरुष को इष्ट बना लो, किसी देवता को इष्ट बना लो, जो तुमको पसंद आ रहा है, जो तुमको पसंद है, पता कर लगाना है, जो तुमको पसंद है कह रहा हूँ। हाँ, जिसको तुमको पसंद है उसी को इष्ट बनाना। So Maharaj is saying whichever gods or goddess you like the most, let's make that god or goddess your Ishta. It can be god and goddesses, it can be any great saint, person, anyone, any great soul can be your Ishta. Yeah. So first of all, you have to find inside yourself
that which eternal figure, which of the eternal form you like the most, and then you make that eternal form, the east. And after you make one east, you should keep being with that east. You should not keep changing your gods or goddesses. So first of all, find which one you like the most, which one you love the most. And once you find it, don't change it. Также ваше продолжение ответа на ваш вопрос, что внутри себя вы почувствуете, когда вы найдете того Бога или ту святую личность, которой вы будете преданы, и во-вторых, потом не следует менять, когда после того, как вы сделали выбор, вы должны быть верны своему выбору. В одном из сатсангов, когда он приехал ранее в Краснодарском крае, упоминал, что ему для жизни гора, узнали, что вода и огонь. Это говорит о том, что снятая зависимость от еды, очевидно, да? В связи с этим вопрос, какую подсказку он может дать здесь всем присутствующим в снижении этой зависимости от еды, его совет из его опыта? И также, если позволить второй вопрос, какие впечатления он помнит от первой зимы гора? Вопрос о предыдущих поездках Махараджа и от избавления зависимости от еды. So, two questions. First question is, when Maharaj came previous time in Russia, in Krasnodarsky Krai, he told that he lived in mountains using only water and fire. So he didn't eat, or maybe he doesn't eat now. And first question is how to avoid passion for eating, how to stop eating, how to do it. So the practical advice. And the second question is what emotions and what feelings does he remember about his first winter in the mountains? So his feelings mainly. About mountains. About mountains, about his first winter in mountains. Winter. Winter, yes. Winter he spent in mountains. Like in Himalayas. In Himalayas. Yes, maybe. महाराज जी पूछ रहे हैं, जब आप पिछली बार कृष्णोद्वार में आए थे तो आपने बताया था कि आप हिमालय क्षेत्र में रहे केवल आग और पानी के साथ आपने भोजन नहीं पाया। तो वो पूछ रहा है कि भोजन के लिए लालसा नहीं हो, इसके लिए क्या सुझाव होने चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमको भूख ना लगे? अच्छा बेटा, साधना करनी पड़ती है तब करना पड़ता है। हाँ, वो कुछ सुझाव पूछ रहा है, क्या सुझाव कैसे हो सकता है? बैठो ईश्वर के नाम पर, जिसकी इष्टि बुला के उसके नाम पर बैठो, वो तुम्हारी भूख प्यास प्रहसन करेगी। जितनी ताकत अन्न में है उतनी जल में भी है, हवा में भी है। अन्न जल से तो आप रह जाओगे एक आध हफ्ते, हवा से तो 5 मिनट भी नहीं रह सकते हो। वायु का भी शरीर जीवित रह सकता है। 5 प्राण हैं, 5 प्राणों में एक की अगर वायु भी आप लेते हैं तो आप वायु के आधार से जीवित रह सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे 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 अन्न को आहार पर छोड़ते जाओ कम करते इसका ऋषि पूछो, लेकिन इसने संलायन मुझसे लिया था, कैसे लिया था? 1 महीने का व्रत लिया था, तो क्या खाता ना है, 3-4 दिन निराहार रहता था। हवा से भी जीवित रह सकता है आदमी। अभी हजारों वर्ष से हिमालय में महात्मा लोग हैं जो केवल हवा सांस लेते हैं, हवा का असर करते हैं।
और उनका दूसरा प्रश्न है कि आप जब पहली बार हिमालय में गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? और तो जो पानी में डूबता है उसको पता चलता है कि क्या होता है, वाणी से नहीं बताया जाता है वो। आप जाके देखो हिमालय में कैसा होता है। So Maharaj is saying that you start to live without food. It happens through practice. You have to do sadhana to live without food. Yeah. He's saying that the water and air have same amount of energy which food has. Yeah? You can live without food for many days, but you cannot live without air for like more than 5 minutes, 10 minutes. So he's saying the air and water actually have more energy than food. But to completely leave food, you have to have a practice. You have to do practice, and you keep taking the name of eternal. It will give you energy to be hungry and not to eat food and not to feel hungry. Yeah? And then about Himalayas, he said that ask the person who is drowning how he's feeling. So the same way you feel. You understand? Drowning, you understand? That person is drowning in the water, how he feels. So the same way, he's saying you have to experience Himalayas by yourself. На первый вопрос ответ. Достаточно энергии, та же, которая содержится в еде, она присутствует в воздухе и в воде. То есть необходимо это понимать, и, конечно же, необходима практика для того, чтобы справиться и прожить без еды. В принципе, организм человека, он может существовать без еды, то есть достаточно праны в еде и в воде. Но в целом ответ тот же самый, практиковать повторение святых имен, и с практикой отказ от еды он возможен, и он приходит. А на второй вопрос ответ Махарадж сказал: представьте, что может испытывать человек, который погружается в воду. И у каждого свой опыт, его опыт был ближе к этому и был таков. Друзья, пока будут раздаваться просад, последний вопрос уже. Время прошло очень быстро. Просто в Екатеринбурге еще Сатсанг, завтра еще будет. Надо в Екатеринбург успеть. I think we are done with Satsang now. Maybe tomorrow we'll sit for longer because we have one more satsang in the city. Возможно, завтра получится больше времени провести, поскольку сегодня еще один сатсанг ждет в Екатеринбурге. И сегодня все.
सत्संग तो हो गया, टॉयलेट जाना तो सामने है महाराज जी। आप शहर में जाके है सत्संग दूसरा जी 1 बजे से। अगर आपको है अभी शहर में है सत्संग महाराज जी 1 बजे से। Just come you guys sit, महाराज जी। जी महाराज जी अभी प्रसाद पाते हैं, फिर ये सबको प्रसाद मिलता है। Если кому-то не досталось,